Hello dear students, we have just finished our chapter named electromagnetic induction, and today here we are with the new chapter, that is alternating current. There are basically two types of current, and those are alternating current and direct current. So first of all, we learn about alternating current. Because DC, we already know that the current which flows from the battery is called as DC, and we had also seen the mechanism of current flow in our current electricity chapter, and that mechanism was basically of direct current. So what is alternating current, and then we'll discuss what is DC current, and then we'll come to know the difference between AC and DC. Alternating current. An alternating current is that current whose magnitude changes continuously with time and direction reverses periodically. As we had studied in electromagnetic induction only, that there were four ways to change the flux. What were those four ways? Phi is equal to NVA cos theta. This was the formula of magnetic flux, and we know if we change the number of turns, magnetic field area, we'll get a change in flux. And due to that change in flux, we are having a formula given by Faraday and Lenz combination, and that is minus dV by dt. The negative sign was given by Lenz, and d phi by dt, that is magnitude of the EMF, is given by Faraday. So the last way to change the flux is the orientation. This theta, पता है हम लोगों को? This theta is basically the angle between area vector and the magnetic field. So what we had done over here is, जब हमने orientation की बात की थी, in that case what we have done is we have placed a north pole and a south pole, and in that north and south pole we have taken a loop, a current a loop. This is not current carrying, we have simply taken a loop perpendicular to the, its axis is basically perpendicular to the direction of magnetic field. Now what we had observed over here is that when this coil is rotated by some mechanism, if I'll rotate this coil, if coil is rotated, then EMF is induced, and hence we get induced current. Suppose this loop is rotated by angular frequency omega. If it is rotated by angular frequency omega, then at time t, what will be our theta? Theta will be equal to omega into t. So what will be the flux? Phi v will be equal to NVA cos omega t. This will be the relation. And if I will differentiate, why I will differentiate? Because I need to find the induced EMF. And what is the formula of induced EMF? It is E is equal to minus d phi v by dt, which we have, this derivation basically we have seen in electromagnetic induction also. So it will be minus of d phi v by dt. So what I am going to do over here is minus of d by dt of NVA
cos omega t. So it will be NBA and its differentiation will be my omega sine omega t, and we'll get a negative sign over here because the differentiation of cos omega t is minus of omega sine omega. So here we got the result as NBA omega sine omega t. So from this equation, that is NBA omega sine omega t, what we observed is if I'll change omega t, or I can say the angle between magnetic field and area vector of the loop, EMF changes. So what I can write over here is EMF, induced EMF rather, as the expression which we got is NBA omega sine omega t, our expression, as omega t changes, EMF changes. So as we come across the equation, and this equation is basically sinusoidal. So E, I can write it as E is equal to E naught sine omega t. What is E naught over here? We discussed it earlier also. It is basically the peak value, the maximum value, you can say, maximum value of EMF, induced EMF, which we acquire. This value we acquire when theta is equal to pi by 2. And we have seen its graph also, and the graph is in between sinusoidal graph. We know that it will acquire a peak value in both negative and positive direction. And we can see that each and every particular time the value of EMF is changing continuously, and it is also reversing in the opposite direction. So if R is the resistance, R is the resistance of this loop, what I can write over here is I will be equal to I naught sine omega t, because E is equal to E naught by R, because I need to find the current. So it will be sine of omega t. So I will be equal to I naught sine omega t. What kind of current is this? This is your alternating current. What kind of current it is? It is your alternating current. Is equal to I naught sine. How we can say that it is alternating current? Because what do we mean by alternating current is whose magnitude changes continuously with time. Is happening over here. You can see that at each and every particular time I'm having a different magnitude. And the most important point is direction reverses periodically. This is the major point which is going to differentiate direct current from alternating current. That alternating current reverses its direction periodically. मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव साइड पर ना होकर के, दिस इज योर पॉजिटिव एंड दिस इज योर नेगेटिव, पॉजिटिव साइड पर ना होकर के एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के, फॉर एग्जांपल आफ्टर 1 second, suppose I am taking an example, after 1 second it reverses, then after 1 second it should again reverse its direction. So at a particular interval of time it should reverse itself. So here, if I observe, I am having two types of EMF, and in the same way, I'll get two types of current, that is positive as well as negative, because equation of I is also sinusoidal. So the direction of current is reversing
at a particular interval of time. So by this equation, what I can say is alternating current equation is analogous to the equation of SHM. As you remember, y is equal to a sine omega t was the equation of SHM, or instantaneous displacement. This is instantaneous displacement. This is peak displacement, or we can say maximum displacement. It is also called as amplitude. In the same way, here I is instantaneous current. I naught is peak value of current. So if I need to find the value of I at any particular interval of time, what I can use is I is equal to I naught sin omega t. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों ही कंडीशन में से एक तो मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट शुड अकर टू डिफरेंशिएट द अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम डायरेक्ट करंट. सो आई होप ये आपको अल्टरनेटिंग करंट समझ में आया कि व्हाट डू वी मीन बाय अल्टरनेटिंग. लेट्स मूव फर्दर. Now we have seen a direct current, and in direct current we have a positive terminal and a negative terminal. We have a circuit and some load is provided to this circuit, and we give the actual direction of current. Actual direction of current. Basically, in DC current, in DC there is actual flow of electrons, and its direction, as we can see in our diagram also, direction remains same. Magnitude can also increase or decrease depending on the load which we apply over here, but its direction will remain the same. Most important thing in DC, sir, you are saying that there is an actual flow of electron, then what will happen in AC? If I talk about AC, the most important part in AC, electrons actually vibrates at their mean position. इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? वाइब्रेट कर रहे हैं. They never move. They just vibrate at their mean position. What do we mean by vibration? How to represent? This is a DC source. How to represent a AC source? AC source is represented by a circle with this symbol, and a resistance is placed. Means we had created some load and we had placed in the circuit. When the AC source is connected with any load, what will happen in the wire? Here, the electrons in the circuit starts vibrating. What they will start? It will start vibrating at their mean position. They will not leave their mean position. They will start vibrating at their mean position. These vibrations are so strong that they will आगे वाले जो भी आपका इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को will provide that energy, that vibrational energy, and each and every electron present in the circuit starts vibrating at their mean position. That is why in the movie you have seen when somebody puts his finger in the switchboard or touches the non-insulated wire, conducting wire, then the person starts vibrating. What is the reason that person starts vibrating? This is basically the vibrations of the electron when we touch that conducting wire enters into our body, and the electrons of our body also starts vibrating. That is why आपने सुना होगा कि यार वो बंदे को करंट लगा, उसका सारा का सारा खून चल गया, because they produce a very high
heat energy. Due to that heat energy, the blood of the person also खत्म हो जाता है. So ये बात आपको समझ में आई कि यहाँ पर डीसी में there is a actual flow of electron, whereas in case of AC, electron actually vibrates at their mean position. Now, most important, if I plot few diagrams over here, suppose this is a graph, this is type T and this is I. What is it? It is AC or DC? See, its magnitude is continuously changing and its direction is also reversing. That means it is AC. Now, if I plot the graph like this, what is it? What it is? It is DC. What it is DC. Its magnitude can change. Magnitude to 1 ampere का 1.5 ampere, 2 ampere हो सकता है, depending on the load which is connected in the circuit. But its direction is not reversing. That is, it is not becoming negative. यहाँ पर देखो ये नेगेटिव हो रहा था बेटा, यहाँ पर फिर पॉजिटिव हो गया एक टाइम इंटरवल के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद फिर ये नेगेटिव हो गया. Whereas DC के केस में ऐसा नहीं होता. DC can be like this also. This is also a DC source because it is not reversing its direction. It is DC. So the most important condition for AC is current को नीचे जाना पड़ेगा. This is DC. सर आपने बताया कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए. ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, बट इट्स डायरेक्शन इज रिवर्सिंग. So the most important condition is direction must reverse. करंट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? रिवर्स होनी चाहिए. ये ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में भी हो सकते हैं. ट्रेपेजॉइडल मतलब कुछ ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे. दिस इज आल्सो अ एसी सोर्स. लेकिन अगर ये ग्राफ पूरा का पूरा पॉजिटिव साइड में रहता है तो वो डीसी, नेगेटिव साइड में पूरा का पूरा रहता है तो वो डीसी है. लेकिन अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव में एक कंटिन्यूअस टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिवर्स कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, then it is called as AC. Now the second point is, we have seen that for DC current we need two terminals. One is positive and another one is negative terminals. But when we see AC, there is basically one point where we actually feel the shock, and there is one neutral point is there. What is the reason behind this? That क्या इसका क्या मतलब है? क्या AC के पास नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है? आंसर इज नो, इट डू नॉट हैव अ नेगेटिव टर्मिनल, बिकॉज इन AC we have positive as well as negative. Positive, negative, positive, negative. तो ये कैसे हो पा रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैसे हो पा रहा है? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको मिलते हैं बेटा फेजेस. आपने सुना होगा मेरे घर में 3 फेज आता है, मेरे घर में 2 फेज आता है. तो these phases basically change the direction of current. Due to this, we don't require any positive or negative terminal. A single wire, a single live wire बोलते हैं बेटा. There is one live wire and there is one neutral wire. Single live wire can produce a current and we can get that supply in our homes. Now, so दूसरा डिफरेंस क्या समझ में आया मुझे? दूसरा डिफरेंस मुझे ये समझ में आया, AC has phases. वो आपका 2 फेज हो सकता है, आप सुनते होंगे बेटा 3 फेज होता है, इस तरीके के फेजेस होते हैं. And in this there is only a live wire and a neutral wire, whereas in DC we have 2 terminals. क्या होते हैं हमारे पास? 2 टर्मिनल्स होते हैं. नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी. ऑब्वियसली बात है, ओमेगा इज देयर इन द एक्सप्रेशन ऑफ करंट.
करंट के एक्सप्रेशन में ओमेगा है. If omega is there, that means I is equal to I naught sin omega t. This is the equation. Omega is what? Omega is 2 pi f. What does it mean? It means AC has frequency. AC के पास क्या होगी? Frequency होगी. Most important बात कि ये जो frequency है, AC has frequency and it varies country to country. कंट्री टू कंट्री बोला मैंने, स्टेट टू स्टेट या सिटी टू सिटी नहीं बेटा, कंट्री टू कंट्री. मतलब इन इंडिया frequency is 50 hertz, whereas in US it is 60 hertz. It means we are getting a constant frequency of AC at our home. Anywhere in India we are getting it as 50 hertz. Whenever you will see any device, any electronic item or electrical item, in that if you see this specification, you'll come to know that each and every appliance which is used in India has a frequency of 50 hertz. मतलब अगर फ्रिज बन रहा है तो वो इंडिया की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बनेगा, मोबाइल बन रहा है तो वो इंडिया की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बनेगा, आपका टीवी बन रहा है तो वो इंडिया की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बनेगा. लेकिन अगर वही चीज यूएस में जाएगी तो वो 60 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग. इंडिया में अपने होम में जो घरों में जो लाइट आती है वो भी कांस्टेंट सप्लाई आती है, दैट इज 220 वोल्ट बोलते हैं. ये हम समझेंगे कि 220 वोल्ट कैसे आता है जब हर जगह चीजें चेंज हो रही है. भाई वोल्टेज तो आपने क्या बताया सर, वोल्टेज इज चेंजिंग एवरीवेयर. सो हाउ वी कैन से दैट at our home we are getting a supply of 220 volt, that we'll see in this chapter only in the later stages, whereas in US the supply is of 110 volts. So these are basically the specification for the generation of electricity in different countries. In India, the electricity is generated at F is equal to 50 hertz and voltage. This is basically the voltage which we get at our home. But the frequency of generation of electricity in India is 50 hertz, whereas in US it is 60 hertz. सिंपल सी बात मुझे ये समझ में आई कि एसी के पास फ्रीक्वेंसी होती है और ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है. और डीसी के केस में क्या होता है, केस ऑफ डीसी frequency is because there is no cycle. किसी भी तरीके की कोई साइकिल नहीं होती है. तो डीसी आइडियल डीसी जो होगा उस केस में आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो फ्रीक्वेंसी आपको जीरो मिलेगी. अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हाउ टू मेजर दिस AC and DC. It is basically DC measured by MCG, moving coil galvanometer, which is studied in magnetic effect of current. By converting it into ammeter and voltmeter, we can measure it very easily. Whereas AC cannot be measured by this device. Why? Because what do we mean by 50 hertz over here? It means 50 hertz means that this cycle is repeating 50 times. How many times? 50 times. That means अगर ये 50 times vary कर रही है in 1 second, what does it mean? कि आपको positive current और negative current, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, कितने टाइम्स? 100 टाइम्स मिलेगा वेरिएशन. और यहाँ पर देखो करंट आपका जीरो भी तो हो रहा है, और कितने बार जीरो हो रहा होगा आपका ये करंट? 100 टाइम्स जीरो हो रहा होगा, और 100 टाइम्स ही अपनी पीक वैल्यू अचीव कर रहा होगा. यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी अप्लायंस चलती है वो अप्लायंस आपकी 100 times in 1 second 50 times चलती है और 50 times बंद होती है.
but we cannot visualize it because it is so fast. एक सेकंड में कोई चीज 50 बार ऑन हुई, 50 बार ऑफ हुई. फैन चलता है. If the speed of fan is very high, we are not able to see the blades of the fan. What is the reason? Because it is having a very high frequency. So those the blades of the fan are not visible. In the same way, और फैन तो बहुत कम स्पीड से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज है. 50 हर्ट्ज मतलब 50 टाइम्स बंद होना है और 50 टाइम्स ही जलना है. कितने टाइम ड्यूरेशन में? एक सेकंड. That we cannot visualize by our naked eyes. For visualizing this, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डिवाइसेस हैं, जिन डिवाइसेस के थ्रू हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट यू कैन सी इन योर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अगर आप में से कोई इंजीनियर बनना चाहता है. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एमसीजी क्यों नहीं मेजर कर सकता? बेटा आपने देखा कि एमसीजी क्या होता है, यहाँ पर एक जीरो होता है, फिर यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके के आपके डिविजन्स बने हुए होते हैं. अब अगर कोई चीज 50 बार बंद हो रही है, 50 टाइम्स जल रही है, मतलब 50 टाइम्स मुझे कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू मिल रही होगी, फिर जीरो आएगी, फिर नेगेटिव जाएगी, फिर पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. तो ये आपका जो नीडल है, जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है, वो नीडल आपको कैसी दिखाई देगी? स्टैटिक दिखाई देगी. कार जब बहुत ज्यादा तेज चल रही होती है तो हमें टायर कैसा लग रहा होता है, मतलब फैन अगर है तो हमें कैसा लग रहा है कि इसके ब्लेड्स ही नहीं. इन द सेम वे, अगर गैल्वेनोमीटर से मैंने एसी करंट कनेक्ट कर दिया, नॉर्मल इस एमसीजी से अगर मैंने एसी करंट को कनेक्ट कर दिया, देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन. हाउ मेनी टाइम्स? 50 टाइम्स. इफ देयर विल बी डिफ्लेक्शन 50 टाइम्स, मतलब 50 बार पॉजिटिव, 50 बार नेगेटिव, 50 बार पॉजिटिव, 50 बार नेगेटिव, कितने टाइम ड्यूरेशन में? 1 सेकंड में. सो वी कैन नॉट विजुअलाइज इट because its value is varying. So how to measure AC? AC can be measured by some new devices, and those devices are called as hot wire ammeter and voltmeter. हॉट वायर एमीटर और वोल्ट मीटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम एसी को मेजर कर सकते हैं. ये डिवाइस कैसे काम करते हैं? they basically works on the principle of heating effect of current. किस पर काम करते हैं? heating effect of current, that we'll see in the later stage of this chapter. हमें समझ में आ गया कि एसी को, डीसी को कैसे मेजर करना है, डीसी को ऐसे मेजर करना है, एसी को इससे मेजर. आगे अगर हम बात करें, तो अगर मान लीजिए कहीं सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मुझे एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है. भाई मेरे फोन में अगर मैं चार्जिंग पर लगाता हूँ तो वो जो चार्ज है वो डीसी में कन्वर्ट होकर ही तो किसमें आएगा? बैटरी में. तो इफ आई वांट टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, there is a device named rectifier. With the help of rectifier, what you can do, you can change AC to DC. Whereas to convert DC to AC, what we can do is we can use inverter. अगर मुझे DC को AC में चेंज करना है तो उसके लिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? इन्वर्टर का यूज करना. Now we have come across the very valid points related to AC and DC. Now, if I need to change the AC voltage, people have seen that कहीं से 22,000 वोल्ट की सप्लाई आ रही होती है, from somewhere 22,000 volt supply arrives and it has been converted into 220. ऐसा हो रहा होता है. भाई जो हमारे घरों में आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, ट्रांसफार्मर का काम क्या है? तो ट्रांसफार्मर बेसिकली change the AC voltage. वो क्या काम करता है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज करता है. मतलब कहीं पर भी अगर मुझे लो वोल्टेज आ रही है उसको हाई करना है तो आई यूज ट्रांसफार्मर. स्टेबलाइजर इज आल्सो अ ट्रांसफार्मर, स्मॉल ट्रांसफार्मर. पहले के टाइम में आप देखते थे बेटे, बड़ा सा एक डब्बा होता था, तो वो एक उसकी वोल्टेज अगर घर में कम आ रही होती तो हम उसकी नॉब को घुमा दिया करते थे. तो उससे क्या हो रहा होता था, हम बेसिकली क्या चाहते थे, हम वहां पर उसकी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते थे.
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर इज द एग्जांपल, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम एसी वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वेयर एज डीसी वोल्टेज कैन नॉट बी चेंज। डायरेक्ट वोल्टेज, इसको डायरेक्ट वोल्टेज लिखते हैं, डायरेक्ट वोल्टेज, इसको भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज लिखिए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। डायरेक्ट वोल्टेज कैन नॉट बी varied, cannot be varied. It requires complex circuit. ऐसे सर्किट की जरूरत पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स सर्किट की जरूरत पड़ेगी। It's not so easy to convert a DC voltage, but we can change the AC voltage very easily, alternating voltage very easily. So here these are the basic differences between DC का ग्राफ कैसा होगा, DC का अगर आइडियल DC की अगर हम बात करेंगे, आइडियल DC का ग्राफ तो ऐसा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब इसकी वैल्यू आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए टाइम से। तो सर अभी जो आपने ये सब बताया वो क्या था, दिस इज बेसिकली पल्सेटिंग DC, pulsating DC, the value is fluctuating, the magnitude is changing, the direction is not reversing. So we have come across several differences between AC and DC. तो इसका एक टेबलर कॉलम है, उस टेबलर कॉलम को एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऑसिलेट्स एट देयर मीन पोजीशन, देयर इज नो एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट, मतलब हम कभी भी AC करंट में डायरेक्शन नहीं बनाएंगे, will not give direction in AC current, not, या ऐसे लिख देता हूं मैं, don't give direction of current flow in AC। AC में कोई डायरेक्शन नहीं बनाई जाती है। DC में there is actual flow of electron, as electron oscillate it means they perform SHM, they flow in a closed path, magnitude of AC varies with time, you have seen it, the magnitude of the current may be constant or varying with time, but only in one direction. AC reverses its direction periodically, DC flows in only in one direction. AC cannot be measured by MCG, it can be measured by hot wire ammeter and voltmeter. Here it is measured by MCG converted voltmeter and ammeter. It requires phases for the flow of AC, whereas it requires two terminal to flow the current. Frequency in India is 50 Hz, यहाँ पर आपकी frequency 0 होती है। AC is not portable, मतलब हम इसको कहीं पर लेकर नहीं जा सकते, but what we can do with the help of generator and fuel, we can generate it anywhere. It is not portable कि कहीं पर मैं सोचूं कि मैं अपने बैग में AC सप्लाई लेकर जाऊं, तो it is not possible। तो सिंपल सी बात, जो भी हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो इंस्टेंटेनियसली खर्च होनी चाहिए। मतलब अगर मेरे थर्मल पावर प्लांट से तो कुछ 25,000 मेगावाट अगर एनर्जी जनरेट हो रही है, तो 25,000 मेगावाट एनर्जी कंज्यूम होने चाहिए। इन द सेम वे DC को हम कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैटरीज, एंड DC इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लाइक you people have already know where the DC supply is available. DC can be converted into AC easily by rectifier, whereas DC to AC conversion is done by inverter. Alternating voltage can be changed easily by using transformer. Alternating voltage cannot be changed. Sorry, alternating voltage cannot be. Sorry, DC voltage, direct voltage cannot be changed easily. It requires complex circuit, as it requires complex circuit. मोस्टली साइनसोइडल सिग्नल में भी ट्रिपेजॉइडल, ट्रायंगुलर, स्क्वायर आपके कैसे भी हो सकते हैं। यहाँ पर ट्रिपेजॉइडल हो सकते हैं लेकिन उसको पल्सेटिंग बोलते हैं। यहाँ पर ये हमने पहले भी देख लिया। फॉर AC वी हैव फेज एंड अ न्यूट्रल पॉइंट इन द स्विच बोर्ड। यहाँ पर क्या है, DC वी हैव टू टर्मिनल्स फॉर द फ्लो ऑफ करंट, दीस पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी seen
previous differences. So basically there are 11 differences which we have seen. Most important, now if somebody asks you what is the equation of AC current, write I is equal to I naught sin omega t. मतलब any sinusoidal equation, any sinusoidal equation is AC. मतलब इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं I is equal to I naught sin omega t plus phi, ऐसा लिख देता हूँ, तो ये भी हमारी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि I is equal to I naught sin omega t, ये आपकी करंट की इक्वेशन हो गई, एंड E is equal to E naught sin omega t, ये आपकी अल्टरनेटिंग EMF की इक्वेशन हो गई। तो ये दोनों ही बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, और इन्हीं दोनों इक्वेशन पर बेस्ड अपना पूरा का पूरा चैप्टर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।